आयोग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख और फैकल्टी मेंबर्स भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर अनुरोध करती हूँ। माननीय राज्यपाल एवं उपराज्यपाल समूह, प्रतिष्ठित कुलपति, निर्देशक और उच्च शिक्षा संस्थानों की सभी आदरणीय फैकल्टी समूह, नमस्कार। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की लाल किले से देश की आने वाले विकास के लिए, आने वाले रोड मैप बनाने के लिए एक नई दृष्टिकोण दिया है, विकसित भारत बनाने के लिए आह्वान किया है। हमारी देश की आजादी की 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के साथ एक नए भारत की निर्माण की उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने करोड़ों लोगों के दिल में महत्वाकांक्षा और आशा की दीपक जलाया है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय सही समय है। मित्रों, पिछले सदी में, 20वीं सदी में जब तीसरे दशक तक हम पहुंचे थे, देश की एक तबका आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरे तबका आने वाले दिनों में, आने वाले सदी में देश कैसे होगा, इसके लिए शिक्षा के आधार पे नई सपने संजो रहे थे, योजना बना रहे थे। आज आवश्यकता है हम समाज की सभी घटकों को, विशेष करके शिक्षाविदों को, विद्यार्थियों को, शिक्षा से जुड़े हुए सभी दायित्ववान लोगों को इकट्ठा करके विकसित भारत की इस विमर्श में जोड़ने की आवश्यकता है। शिक्षा विभाग की ओर से अभी देश में अमृतकाल विमर्श विकसित भारत 2047 की एक सीरीज ऑफ डायलॉग चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी का परम सौभाग्य है उसको एक जन आंदोलन की रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आज देश की सभी मान्यगण्य शिक्षाविदों को, उसके माध्यम से देश की शिक्षा जगत को संबोधित करने का एक अवसर हम सभी के लिए बनाया है। मित्रों, इस विमर्श में नया आशा, आकांक्षा समाज की सभी विषयों के ऊपर, राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, नई रोजगार की सृजन और विश्व की एक नया दृष्टिकोण बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री जी देश के सामने नया कल्पना रख रहे हैं। हमारी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इसकी द्योतक बननी चाहिए। आज हमारी दायित्व है इस विमर्श को देश की नई पीढ़ी के अंदर हमारे कुलपति, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे प्रोभोस्ट, हमारे सारे फैकल्टी, जैसे आजादी की लड़ाई के समय में सभी के अपने अपने दायित्व था, आज प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सभी को अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। मित्रों, आइए आज हम लोग अपने कर्तव्य की, अपने हिस्सा की जिम्मेवारी को संभालें और अमृत काल में विकसित भारत हम सभी की जीवन की एक बड़े लक्ष्य हो। हम सभी की योगदान में शिक्षा को आधार करके हमारी व्यापक परिवार एक नया भारत, नया विश्व की सृजन करे। G20 की मंच पे प्रधानमंत्री जी ने विश्व को एक नया मार्गदर्शन किया है, वसुधैव कुटुंबकम की। आज उसी कड़ी में हम शिक्षा जगत से एक अमृत निकालें, जिसमें हम माननीय प्रधानमंत्री की जो आज मार्गदर्शन रहेगा, जो आह्वान रहेगा, इसी को आज एक जन आंदोलन को एक प्रजातांत्रिक तरीके से साकार करने के लिए सभी की योगदान चाहिए, सभी की विमर्श चाहिए। मैं हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं और उनको निवेदन करता हूं हम सभी को आह्वान करें, मार्गदर्शन करें। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े राज्यपाल श्री, शिक्षा जगत के महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को
विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है, उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है। भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। साथियों, हम सभी के सामने प्रेरणा के लिए आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है। जब हम एक ध्येय के साथ, एक जोश, एक जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे, तब हमें सफलता मिली। इस दौरान सत्याग्रह हो, क्रांति का रास्ता हो, स्वदेशी को लेकर जागरूकता हो, सामाजिक और शैक्षिक सुधार की चेतना हो, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकत बन गई थी। इसी कालखंड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो कालखंड था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है।
कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है। और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आई से ही शुरू होता है। इस माई गॉव पर, इस ऑनलाइन आइडियाज के पोर्टल पर 5 अलग अलग थीम्स पर सुझाव दिए जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन 10 सुझावों के लिए पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है। साथियों, जब मैं सुझावों की बात करता हूं
तो आपके सामने खुला आसमान है। हमें देश में एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश की कर्णधार बनेगी, जो देश को नेतृत्व और दिशा देगी। हमें देश के एक ऐसी नौजवान पौध को तैयार करना है जो देश हित को सर्वोपरि रखते, जो अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। हमें सिर्फ शिक्षा और कौशल तक ही सीमित नहीं रहना है। एक नागरिक के तौर पर 24 घंटे देश के नागरिक कैसे सजग रहें, इस दिशा में भी प्रयास बढ़ाने आवश्यक है। हमें समाज में वो चेतना लानी है, कैमरे लगे हो या न लगे हो, लोग ट्रैफिक की रेड लाइट जंप न करें। लोगों में कर्तव्य बोध इतना ज्यादा हो कि वो समय पर दफ्तर पहुंचे, अपने दायित्वों को निभाने के लिए आगे बढ़कर काम करें। हमारे यहां जो भी प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी इतनी बेहतर हो कि मेड इन इंडिया देखकर लेने वाले का गर्व और बढ़ जाए। जब देश का हर नागरिक जिस भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा। अब जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा विषय है, जब जल संरक्षण को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब बिजली बचाने को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब धरती मां को बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कम होगा, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के प्रति गंभीरता होगी, तो समाज पर, देश पर, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। आप भी मानेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्वच्छता के जन आंदोलन को नई ऊर्जा कैसे दी जाए, इसके लिए भी आपके सुझाव अहम होंगे। हमारे युवा कैसे आधुनिक लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट्स का मुकाबला करें, इसके लिए आपके सुझाव अहम होंगे। मोबाइल की दुनिया के अलावा हमारे युवा बाहर की दुनिया भी देखें, ये भी उतना ही जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है, और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है। देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो उससे जुड़े भी कितने ही विषय हैं। 3-4 साल के कोर्स के बाद हमारे शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र देते हैं, डिग्रियां देते हैं, लेकिन क्या हमें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए
कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनिवार्य रूप से हो। ऐसी चर्चाएं, इससे जुड़े सुझाव ही विकसित भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ट करेंगे। इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विषयों पर मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का यह अमृतकाल वैसा ही है, वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक देता है, समय का पल पल एक ही देह से जोड़ देता है, और जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की परीक्षा की तारीख आ गई है। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और भारत युवा शक्ति से सशक्त है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके कैरियर को भी यही 25 साल तय करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा हो, ये हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है। देश के युवाओं की आवाज को विकसित भारत के निर्माण की नीति रणनीति में ढालना चाहती है। युवाओं के साथ आप सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, इसलिए इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है, वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना से मुकाबला हो, वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी है। सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। आप सभी विद्वत जन स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ये देश का भविष्य लिखने का एक महाअभियान है। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा। एक बार फिर आप सभी को आज के इस वर्कशॉप की तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज से जो आंदोलन शुभारंभ हो रहा है और मेरा पक्का विश्वास है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना सकते हैं, मिलकर के बना सकते हैं। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है। नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षण जगत की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कालखंड है। उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। विकसित भारत एक्ट 2047 युवाओं की आवाज, इस पहल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाने के बाद अब दिल्ली से ये कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। अब आप सबसे अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप वर्कशॉप्स और पैनल डिस्कशंस के आधार पर आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। Ladies and gentlemen, with this we conclude the launch function of Viksit Bharat Act 2047 Voice of Youth from Delhi. You may all kindly proceed with the workshops and panel discussions as per the scheduled program. Thank you all for joining us. Namaskar. माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी वक्तव्य के उपरांत हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस समारोह के लिए समय निकाला। साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी के भी हम आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ विकसित भारत कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु समय निकाला। जैसा कि निर्देशित है, अब हम अपने पैनल डिस्कशंस प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे 3 पैनल डिस्कशंस होने प्रस्तावित हैं। पहला टॉपिक है थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। दूसरा टॉपिक है इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान हो रहा है। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्य अतिथियों से मेरा अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम के द्वितीय चरण में जाने वाले हैं। प्रथम पैनल डिस्कशन थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए सर्वप्रथम मैं मॉडरेटर डॉक्टर रविकेश श्रीवास्तव को, जो कि वीसी हैं आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी के, मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। डॉक्टर रविकेश श्रीवास्तव।
इसी क्रम में हम अपने प्रथम वक्ता डॉक्टर राम शर्मा वीसी यूपीईएस यूनिवर्सिटी देहरादून को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर रामकरण सिंह वीसी इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। डॉक्टर के रवेरकर डीन एंड पीजीएस रजिस्ट्रार जीबीपी यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर नीता बोरा शर्मा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट कुमाऊं यूनिवर्सिटी। कृपया जोरदार तालियों से हमारे पैनल डिस्कशन स्पेशलिस्ट का स्वागत कीजिएगा। कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन के उपरांत हम इस पैनल डिस्कशन का प्रारंभ करेंगे। हमारे प्रत्येक वक्ता के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। दिए गए क्रम में मॉडरेटर के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक वक्ता 5 मिनट अपने व्याख्यान हमारे साथ साझा करेंगे। अंत में मॉडरेटर महोदय संपूर्ण व्याख्यान का एक संक्षिप्त विवरण देंगे। उस संक्षिप्त विवरण के उपरांत क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रथम टॉपिक थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी। हैंडिंग ओवर द पोडियम टू डॉक्टर रविकेश श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग महामहिम राज्यपाल जी एवं उपस्थित गण, कुलपति एवं शिक्षकगण। द फर्स्ट पैनल डिस्कशन थीम इज थ्राइविंग एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी, एंड फॉर दिस वी हैव इन पैनल Dr. Ram Sharma, Vice Chancellor, UPS University, Dehradun. Dr. Ramkaran Singh, Vice Chancellor, ICFA University, Dehradun. Dr. Karan P. Raverkar, Dean PGS Registrar, GB Pant University. Professor Neeta Bora Sharma, Political Sciences Department, Kumaun University, Nainital. So we are going to start a brief presentation or discussion, 5 minutes each to each panelist. After that we'll conclude and then session will be open for Q&A. So can we start, Professor Ram? Hello. Yeah. Good morning, everyone. So the topic is thriving and sustainable economy, and I was thinking, what should I speak? And I mean, Indian economy is on the sweet spot of taking off, like the Prime Minister mentioned. We recently became $4 trillion economy, and in next 10 years or so we should be about $7 to $8 trillion economy, and by 2047 we should be about $30 trillion economy. By comparison, America today is about $17 trillion economy, and so on. So essentially we should be amongst top 2 economies in the world. So economic front, of course, India's story is going on pretty well. The world is seeing what we are doing. However, because it is also thriving and sustainable, so I thought, what should be the kind of dimensions of such economic growth that India is seeing, and what kind of economic model that we as a nation could think of. Should we copy the capital model, the Western capital model, or should we have our kind of own model? Should we have GDP as the main criteria of economic growth, or like we discuss at least in Uttarakhand quite a bit, which is gross environmental produce, GEP should be a parameter, or like the way Bhutan does, gross happiness produce, should we consider happiness as well? Also, what are more important parameters of the economic growth? I mean, we are seeing the air quality in Delhi, for example, the water quality,
the space, who owns the space. I mean, the Panch Mahabhut, that fundamentally it is air, water, Akash, Agni and Vayu. And I mean, all of them. So what should be the dimension of economic growth towards these kinds of aspects or issues as well? Also, when it comes to GDP or a demand and supply based Western model of economy, it's a capitalistic model essentially, and who decides the value of a certain product or service in a capitalistic economy. For example, if we were to have only two people in the society, let's say an investment banker and a farmer, and as we know, investment bankers make a lot of money and farmers don't. Now, if there were only two people in the society, then who decides the value of the service that they are providing to each other? Whether farmer would need investment banker or whether investment banker would need a farmer, right? So those are the questions that, and this can be replicated to a lot of other areas as well. I mean, let's take up the example of, let's say, teachers. What's the role of the services that teachers provide in a society? And what do they get in return? I mean, money-wise, teachers may or may not get the kind of return that a capitalistic society might want, but even respect-wise, do we get that return? Which, I mean, at some point, at least our culture or society used to have. Now, also other dimensions of the model. For example, should we have socialistic, I mean, what are the social dimensions of economic growth? Whether it should be a collectivistic model like India, China, kind of, so to say, Eastern societies were, or they have been, or it should be an individualistic model like the way the Western societies have been. And what have been the cons of individualistic systems that the Western society sees today? For example, aging societies. Now, when the society ages, I was in Italy last week, and the population growth is negative. So aged people are kind of increasing in the society. Taxpayer base is decreasing. Social services, social security schemes are quite good, and therefore the people who are funding these social services or social activities, that base is decreasing, and the dependents, they are increasing. Also, there is a lot of immigration, and economy is not doing well. Pandemic also was not too kind, and so on. So what kind of social dimension? And then that results into, for example, loneliness, mental health issues, homelessness. I mean, you would be surprised the kind of homeless people you see in America or even California. I mean, do we want those kinds of outcomes of an economic growth? Those are the questions that we need to kind of be cognizant of. Also, what should be the philosophical and spiritual model of such economic and sustainable growth? Mahabharata, for example, says one very interesting quote, and this quote is repeated again and again by Ved Vyas. And he says that I am shouting on top of my voice and telling the world that dharma lead to earth, calm and moksha. Right? And people keep chasing earth, calm, moksha may or may not be. But generally, if you keep the first thing right, then it kind of results into the other things also falling in place. And so also is the very strong spiritual, philosophical basis of the entire kind of culture that we have is Ishopanishad kind of sums it up well. Tena tyaktena punjita. I mean, in the sense, no matter what economic growth we have, it cannot be sustainable unless we kind of consume with, so to say, some form of detachment, some form of tyag. I'm not kind of able to find an equivalent and strong word in English, and therefore I'm using this word. That unless we consume with tyag or detachment, economy cannot be sustainable, environment cannot be sustainable. Thank you. Thank you, Professor Ram. Now I would like to invite Professor Dr. Ram Karan Singh. Good morning and thank you all. Since this program is
initiated by Honorable Prime Minister. So I wish His Excellency Prime Minister of India Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor of Uttarakhand Lieutenant General Shri Gurmeet Singh ji, and Chief Minister of the State and Education Minister. And it is with immense pride and pleasure that I am here today to discuss the exciting potential of India's thriving and sustainable economy. When I got this task and make this presentation in 5 minutes or so, I was thinking that I should evolve the topic in a way so that it should include each and everything, the important keywords which are over here. That's why I prepared a manuscript for this. As we navigate through the challenge and opportunities of the 21st century, it becomes imperative for us to forge a path that not only people's economic growth but also ensures the well-being of our people and the longevity of our environment. India, with a cultural diversity, multiple languages and tradition, has long been a beacon of resilience and progress. The strides we have taken on the economic front are commendable, but as we gauge into the future, the imperative is clear. Our growth must not only be robust but sustainable, ensuring prosperity for generations to come. In the next few minutes, let's delve into the key components of constitute the foundation of thriving and sustainable economy for India, a vision that encapsulates not only economic growth but also social inclusivity and environmental stewardship. It is a vision that goes beyond the numbers of a balance sheet, seeking to foster an environment where every citizen plays a part in the nation's success, and our natural resources are cherished as the lifeblood of our collective future. India, with a rich history and diverse culture, stands at a critical juncture. We have witnessed remarkable economic progress, yet we recognize that sustainable development is the need of the hour. Our vision is not just about GDP figures, but about fostering a holistic environment where prosperity is shared and our resources are managed responsibly. We are witnessing a remarkable transformation across our nation. A young and dynamic workforce coupled with a blooming digital sector and an unwavering entrepreneurial spirit is propelling India towards unprecedented economic growth. This is not just a path to progress, it is a journey towards a future where prosperity, inclusivity, and sustainability go hand in hand. The multi-engine of growth. Many a time we are talking about the single engine, double engine, government, sarkars, and policies, but I see these things in the multiple engine in a perspective. In the next couple of minutes, I will discuss why this is a multi-engine growth. One is a democratic dividend. India's young population is a potent force. We have the second largest pool of skilled labor in the world, offering immense potential for business and industry. This demographic dividend is driving force behind our economic expansion and testament to the power of our youth. Digital revolution. From bustling e-commerce platforms to revolutionary fintech solution, India's digital landscape is evolving at a breathtaking pace. This digital evolution is not only creating new opportunities and business, but also transforming traditional sectors and empowering individuals. Startup ecosystem. The entrepreneurial spirit of India shines brightly in its thriving startup ecosystem, from innovation tech startups to socially conscious ventures. These young companies are not only disrupting industries, but also creating jobs and dividing innovations.
driving innovations. Government incentives, government initiatives. Our visionary government has implemented crucial policies and initiatives to fuel economic growth, from tax reforms to infrastructure development and ease of doing business reforms. These steps have created a favorable environment for business to flourish and attract foreign investments. Economic diversification. India's economy is no longer solely reliant on agriculture. Now India has a GDP where the multiple factors contribute for the growth of the GDP of the country. We are witnessing a flourishing of multi-sectors like manufacturing, services, and knowledge-based industry. If I say the knowledge-based industry, even education system we started calling as an industry, and we want to become a knowledge-based economy in the times to come. And if we compare India with the rest of the world, and most important example which people quote, the knowledge-based economy as a US. So if we want keep become a knowledge-based economy like US, then higher education system, research system need to evolve in the way in these countries has evolved. No doubt our NEP 2020 has brought so many things which are common in the advanced countries' education system, but real-time implementations, right kind of the implementations are going to be the backbone for India to be a knowledge-based economy. But India has a potential to become a knowledge-based economy like US and so many other advanced countries, especially English-speaking countries when I say. Because most of our students, they opt for the higher education in English-speaking countries, either USA, UK, Australia, New Zealand, maybe, and so many other countries where the education. So a big GDP of this country goes in the form of a tuition fees to the advanced countries. If we can save that revenue and we also attract the foreign students come and study in India, so India can head towards the knowledge-based economy. This is going to be a most important power in the times to come for the India. Building a sustainable future, as we celebrate this economic momentum, we must not forget the importance of building sustainable future. This requires future on the key areas. Now I'm moving towards the sustainability. I talked about certain key features of the economic growth. And if we go for the sustainability, if we go for the literal meaning of the sustainability means anything should be available for the future generation in the times to come, in the good shape, good quality, good quantity, the way we are availing them. That is the meaning of the sustainability. Sustainability word is common for each and every walk of life today. Whether we talk about the economic sustainability, educational sustainability. So the long worry for the future is we should not exhaust the resource of this planet in a way so that coming generation should not have the similar kind of the resource which we are going to have for the future. So I shall just take the important keywords over here. Environmental sustainability is long. I can discuss a lot on this aspect. Inclusive growth, resource efficiency, urban development, global partnership. All these things are a very debative and long topics I can discuss for hours and hours, and all others can contribute on the same. But in order to conclude here, together let us write the next chapter of India's economic success story, a story that is not only about growth, but also about the sustainability, inclusivity, and brighter future for generations to come. Jai Hind. Thank you. Thank you, Professor Dr. Ram Karan. Now I would like to invite Dr. Kiran P. Ravekar. Yes, please. Thank you, sir. His Excellency, the Governor of Uttarakhand, Dr. Gurmeet Singh Ji, all Vice Chancellors, dignitaries, and delegates. It's a great opportunity for me to keep my views on this occasion to turn the India into the developed country
that is Vikasit Bharat by 2047. It is rightly said that the 21st century is the India's century and it is Amrit Kal, and we should harness the Amrit from particular Amrit Kal to take the country ahead to make developed country of Vikasit Bharat. The stage has been set in the last 20 years for moving towards the Vikasit Bharat. It has many transformations on many fronts have been made, and we are ready to take off. The massive expansion in the social and in the economic infrastructure has been taken place. Like the expansion of the various different universities, IITs, IIMs, nursing colleges, skilling. In the healthcare also, the massive developments have been taken place. Phenomenal growth in other sectors such as your mobile phones and internet penetration has been massive in India. 120 crore mobile phones are in use in India. 80 crores internet users are there. 30 crores people are using the UPI, that is Digital Bharat. Then there is a massive expansion of the highways networks, which has been expanded by 60% in last 10 years to 1,45,240 kilometers through the Bharatmala project. Then railways has also picked up the speed by improved both by capacity as well as bringing the new trains like Vande Bharat, and also in Uttarakhand, the new project at the Karnaprayag rail line, which is going to contribute to take this Bharat towards the Vikasit Bharat by 2047. We have also experienced the 100% growth in the airports from 74 to 148 through the Udan, and in the science and technology we are not behind. We have just experienced the Chandrayaan 3 success and also the Aditya and so many space missions. Digital and public infrastructures are very, very envy of the world, such as Aadhaar, then the COVID platform, UPI, JMN, etc. But these are all just to mention, and this is a start. And these are all the secondary and the tertiary sector. The primary sector is the agriculture. And agriculture, and that's why we say, it's the economy prime sector and is the largest and the most prominent sector for the economy thriving as well as for its sustainability. We can thrive, but that should be sustained. The growth can be achieved in a small time, that can be visible for a short time, but if you want to make it sustainable for a long time, then there should be a support. And in India, the agriculture can support this particular, the sustainability to the complete economy, the thriving of the economy ecosystem. Because this agriculture uses the natural resources directly and produces the product which are used by the secondary and the tertiary sectors, such for the manufacturing and the services like the processing food and the others. And that's why agriculture is a significant driving force for economic expansion and poverty alleviation. Similarly, with the growth, the income is increasing, and with the increase in income, the consumption of basket of the different income categories is changing. Since 1990, the change in the consumption basket has been seen. Previously, in the consumption basket, there was a rice and the wheat, that is cereals. But since 1990, the change in the demand has been changed from cereals to the vegetables, fruits, eggs, poultry, meat, and so on. And therefore, these demand increases, particularly in the consumption basket, based upon the income growth, taste preference, and the population increase. And therefore, we have to focus on how we can produce more and more with the ever decreasing the natural resources, that is soil, water, and in the land. Since 1990, it has been seen that the demand for the cereals was only 13%, but the demand for the potatoes has increased by 24%, vegetables by 30%, milk by 40%, eggs by 200%, poultry by 250%, and these are the faster rate increase as compared to the cereals. And therefore, in future, the composition will be dominant by these particular commodities. And therefore, we have to work on this one. And as we all know, the agriculture contributes to the 1/5 GDP. And it's not the 1/5 GDP, but it is the primary sector, and whatever the secondary and the tertiary sector contributes in forms of GDP, respectively 25.92 and 53.89, these GDPs are also dependent on the agriculture sector, because agriculture uses the primary natural resources, produce the thing, and that produce is being used by the secondary and the tertiary sectors for the development and for generating the GDP. And therefore, the focus shall be given on the agriculture, how the agriculture can be developed and can be further
modernized. And therefore, with the limited land and water resources, agricultural growth must be accelerated, and that can be accelerated positively through combining the organic farming practices with the conventional farming practices, natural farming, keeping soil health and the produce quality in mind, and use of new technologies such as farm robotics, Internet of Things, sensors and actuators, NIS and EC sensors, artificial intelligence, India Agri-Stock, producers asset stocks, peer-to-peer learning. That is, the agriculture is going to shift from the manual labors to your technological things, and therefore there is a need to train the farmers, the rural farmers, particularly in these new technologies, and therefore we will be requiring the peer-to-peer learning network, and that's why we have to develop the education in that way also, so we can train our farmers, and then the high-tech fresh produce infrastructure has to be built. And this is required, as I said, because the agriculture is going to sustain the thriving economy of India, to take the India further, to make it to become developed Bharat, Vikasit Bharat by 2047. I will just conclude that the young India's creativity and potential for innovation, coupled with support of government policies such as Digital India, Startup India, enables the youth to become job creators and fuel the Indian economy to thrive and sustain to turn the India into Vikasit Bharat 2047. Thank you very much. Thank you, Dr. Kiran. Now I would like to invite Professor Neeta Bora. Please, ma'am. माननीय महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड, सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, माननीय कुलपतिगण और पैनलिस्ट एंड मॉडरेटर, नीति आयोग भारत सरकार के तत्वाधान में विकसित भारत 2047 विषय पर आयोजित कार्यक्रम में हमको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन से संबोधित किया, जिससे हम सबको एक नया रास्ता मिला। मैं आज यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DS रावत जी के निर्देशानुसार अपने माननीय कुलसचिव एवं डॉक्टर सावित्री कैड़ा जंतवाल और प्रोफेसर कुमुद उपाध्याय के साथ यहाँ पर आई हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में व्यापक रूप से विद्वत जनों ने अपनी बात यहाँ पर रखी। मैं आम जन से जोड़ते हुए अपनी मन की बात इस विषय पर यहाँ पर रखूँगी। आज का जो विषय है वो विकसित भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 के स्वतंत्रता दिवस उद्बोधन में वर्ष 1947 तक अपना लक्ष्य घोषित किया था। उन्होंने अमृत काल के लक्ष्य पाने के लिए नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित भारत का आधार है। स्थिर अर्थव्यवस्था, जैसा कि अभी आप लोगों ने भी बताया, हमारा अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें सामाजिक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किए बिना आर्थिक विकास की गति को अविरल बनाए रखने की क्षमता हो। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का समुचित मात्रा में प्रयोग वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हो और इस प्रकार से हो कि ये भविष्य के लिए भी इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह न लगे। विकसित भारत के लक्ष्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना भी है। मैं समझती हूँ एक संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पहले सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, रोजगार मिले, उनका तन स्वस्थ होगा, उनका मन स्वस्थ होगा, तभी वो विकसित भारत में अपना अधिकतम दे सकेंगे। ये बहुत अनिवार्य है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ विकास की गति को इस प्रकार से व्यवस्थित करना आवश्यक होगा कि ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक बने तथा पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने में कारगर साबित हो। युवा जनसंख्या वाला देश भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना पृथक स्थान रखता है
और इस युवा जनसंख्या के समुचित कार्यशील होने का अर्थ है कि भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर होने के लिए तैयार है। कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर की बात यहाँ पर हुई। कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण एवं विविधीकरण, उन्नत औद्योगिक तकनीकों के साथ सेवा क्षेत्र में भी भारतीय अर्थव्यवस्था नवीन आयाम स्थापित कर रही है। ये तीनों क्षेत्र देश में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी को अपना संतुलित योगदान देते हैं। बात करूंगी महिलाओं की। देश की आधी आबादी के आर्थिक उन्नतीकरण के माध्यम से उनमें सशक्तिकरण जागृत करना वास्तव में देश के विकास की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सूक्ष्म वित्त ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए हैं। इन स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबिता की भावना जागृत कर उनके सशक्तिकरण में बढ़ावा देने में सफलता प्राप्त की है। वर्तमान संदर्भ में हमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि हम विकास की द्रुत गति को प्रकृति के अनुरूप ही रखकर आगे की ओर अपने आर्थिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें, जिसमें महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना अति आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं प्रकृति का साक्षात रूप हैं तथा प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में अपनी भूमिका को निभाने की सामर्थ्य रखती हैं। भारतीय महिलाएं जीडीपी में 18% योगदान करती है और आने वाले समय में महिला सशक्ति के कारण भारत की जीडीपी 2050 तक लगभग $770 बिलियन तक बढ़ सकती है। भारत स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कम्युनिटी के क्षेत्र में दुनिया का तीसरा बड़ा देश है, पर स्टार्टअप में सिर्फ 10% महिलाएं ही फाउंडर हैं। आगे बढ़ते हुए हमें कम से कम 3 क्षेत्रों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है: श्रम बाजार और कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा और वित्त तक पहुंच, फर्मों को लक्षित रोजगार सब्सिडी के डिज़ाइन, क्योंकि नौकरी पर प्रशिक्षण के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और अधिक लचीले काम के घंटों की शुरुआत के माध्यम से महिला श्रम बाजार में भागीदारी में सुधार किया जा सकता है। मेरा मानना है कि वह करना महत्वपूर्ण है। हमारे विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हैं, जो आपको पसंद है। कड़ी मेहनत करें और दृढ़ रहें। अनिवार्य रूप से बाधाएं आएंगी, असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमने देखा है जो लोग सफल होते हैं उनमें आगे बढ़ने का जुनून और दृढ़ संकल्प होता है। माननीय मोदी जी ने भी यही भाव हमको दिया कि हमको दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ना है। डॉक्टर कलाम के शब्दों को बच्चों में यहाँ पर कोट करूंगी: मोर देन 50 crore youth of the country should be dedicated to the rise of this beautiful nation. But to achieve this, every youth should have the spirit that, yes, I can do it. This spirit will change into we, and we will able to say that, yes, we can do it, and in this way, India will do it. और हम पहुंच गए कहाँ? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में। महामहिम का हार्दिक धन्यवाद कि मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर मिला। आप सभी का आभार। Thank you. Thank you, our distinguished panel members. Briefly, I would like to conclude. First, I would like to touch some of the points highlighted by our panelist members. Like Dr. Ram Sharma from UPS has touched the GDP, whether our GDP should be a copy of the capitalist country or we should have some innovative way to think upon. Second, he has also gross environmental index of Uttarakhand. Are we need to focus here or the gross happiness like Bhutan? And development should also, finally he has concluded, should be in a way that कि थोड़ा हम त्याग करें, जो उन्होंने word use किया, that is the how we are here to take consideration of the future generation. That is the basically the sustainable economy. We need to develop because of the fulfilling the need of the our population.
But at the same time, we should not forget that these resources should be available for our future generation. So that is the theme I think Professor Dr. Ram Sharma has taken upon. And now Dr. Ram Karan, both Ram, he has discussed more on the cultural diversity and how these cultural diversity we can, ek se anek and anek se ek, we can think and we can use as a, I think, as synergy, how we can mix up to take this lead ahead. Social inclusivity, he has touched the point, because without social inclusivity, any sustainable economy is not possible. Economic and holistic development, and also he has touched the innovations to create the job. So these are some of the points touched by him. And the third panelist, basically, he has focused more on the science and technology, digital India, and finally he has touched the agriculture. Yes, agriculture is basically any country can think or move ahead only once there is sufficiency of the food, guarantee of food. Without food is not possible. So once we have a food sufficient, at one point of time when the subsistence economy, now we are developing, then develop. So how we are moving? So agriculture is the backbone of any country. How this agriculture can be developed with a growth rate more than 3%, and also to ensure our resources so that the future generation should not be compromised. Finally, ma'am has touched many things, मानवी and रोटी कपड़ा मकान रोजगार, and finally उन्होंने महिलाओं के बारे में डिस्कस किया, how these महिलाएं is very very important. In fact, in my opinion also, that if you are really thinking to be the Viksit Bharat at 2047, I think this women empowerment is very very empowered. Because if you are empowering one woman, that means at the same time you are empowering the 5 persons in a family. And if one woman is empowered in a family, I think it is a 100% guarantee that she is going to ensure the good education for his kids. And that is the way that we can move forward. So women empowerment is very very important. And finally, I would like to touch how we can move ahead for the Viksit Bharat. Viksit Bharat 2047. I think when I was a student of economics in BHU, I used to word this India as a developing economy. And I was really thinking that how we can be developed economy. The first time the Kalam has given this word that by 2020 we can start to move towards the development economy. And second time our Honorable Prime Minister has taken very seriously, and he has given the timeline, 2047. That means everything is clear. First we have to be very positive, and we all present here should feel proud that we are going to be the part of the launch of this Viksit Bharat, which we can see in 2047 for our future generation. Is it possible? Because in the last few years, for Viksit Bharat, what is the most important? There are many indicators. But as economics, I feel that there are 3 major important indicators. One is the, of course, GDP per capita. Second is the HDI, Human Development Index. And third is the GER, Gross Enrollment Ratio. GDP per capita, if you see, India as of now has increased, but is still only $2,672 per year, which if you compare with the most of the developed economy, developed nation, we are having more than $50,000 per year. Just imagine, 2,000 and 50,000. How we can move? But it is possible because in the last few years, we have doubled our per capita income. And our PPP is also 9,000 and above. So that is doable if you are moving forward. Second is the HDI, Human Development Index. And third, I will take the GR. And from the GR, Gross Enrollment Ratio. India Gross Enrollment Ratio for higher education is still only 27.3%, which India government has given the target by 2035.
it should reach to 50%. And it is possible because 2030, they have given the target for the school education should reach to the 100%. Means kids should go to the school. Because if there will be primary education only, then we can think about the higher education. That is not possible without prayer. So this is also equally important, and then we can get the, and this GR is mainly, basically meaning is the population in the age bracket of the 18 to 23, out of these population, how many are going to enroll for the graduation. And believe me, if the students are going to graduate, the rest of the, whether it is SDI, whether it is the per capita GDP, everything will ensure automatically. HDI, human development, is all about the health, is all about the social change, is all about the infant mortality rate, it's all about the population growth rate. And if our population will be well educated, well informed, they will take care on their own. Because there is no agency who are going to teach all these things. So we need to, because we educationists, we should take that we are going to play our role as a volunteer to take this vision, very aspiring vision. This Viksit Bharat 2047 is not so easy and that is not doable. Both challenging but aspiring. So if educationists, all the Shikshabid, is going to take the role as a volunteer, it is very much doable. Because in my PhD, my conclusion and finding is that if you just provide the education, rest everything any economy can ensure in their country. So our role is going to be very, very important in this. I have also read one report that by 2030, most of the European country and the other country is going to, I think, short with the, because of aging population. India is the young country. So how this gap can be fulfilled? We should focus more on the skill development. Because if skill will be there, these population can go anywhere in the world and can have a good income generations. And because I think time is over, so with this, be positive. Though it's challenging, but it is doable. Viksit Bharat at 2047, if we educationists honestly and on ground, if you are going to play our role. Thank you, sir. Thank you. And thank you to Mahamahimji for giving this opportunity to share our views. Thank you, panelists. Thank you, organizers. यदि हमारे दर्शक दीर्घा से किसी दर्शक का कोई प्रश्न है तो आप this session is कृपया माइक देने का कष्ट करें. His Excellency Governor of Uttarakhand and Chancellor of the universities. Because we are short of time, I will not take much of time. My question is to all of you experts. You are talking of this GDP, talking of the agriculture, talking of the human service, service sector. If, best of my knowledge, the three sectors that are contributing 100%, almost 100%, the first is the service sector in India, by 54%, and second is the technology with 25 or something like that. The last is the agriculture sector, which is needed for the global food security. What you think of it, only the sector that is going to give you the global food security at the last, even though the technological advancement is there. This is one, it is not a question, I'm interested to make my understanding better. Second is that, if we will focus on this service sector through the advancement, what do you think that we will be decreasing the service sector contribution in the GDP? Because our service sector is basically based on tourism and medical, nursing, teaching. So what kind of percentage we are investing on the service sector, especially if we like to say the teaching? Globally, if you will see the universities, they are earning huge money from the overseas student. Are we in a position to attract the international student to strengthen our service sector in terms of the teaching and learning and research? I think we are not. So what could be the measures we can take to rationalize it and increase it? And secondly, how to sustain the agriculture? Because agriculture sustainability in India is just confined to certain states. If you compare the agriculture of the Indian states, you will find certain states are still not in a position to sustain their own agriculture viability. Thank you very much. Yeah. Actually,
there are 17 SDG goals of the United Nations. Those have been implemented in 2015, and we have to target to achieve those goals in next 15 years by 2030. So this responsibility is for all the member countries of 195 countries of the world, and India is one of them. Coming to the agriculture sector, India is going to face a huge challenge in the terms of sustainability, because in India, a lot of urbanization is taking place with a very high pace. And that is leading so many other environmental problems and developmental problems. So in India, now how we are going to keep the pace with the agriculture sector, we have to move towards the precision farming system. The kind of farming system which we have, because agricultural land are reducing with a very high pace. In the times to come, we have a very less land for the agriculture. But huge population of 1.4 billion or plus, we need to have a food sustainability. So the solution for the problem is only to need to shift to the precision farming system like other advanced nations which they are doing. This means we have to increase the yield per area of the land. And in order to increase the yield, we have to move to the precision farming system, because we have a pressure on the natural resources. Soil quality is degrading. We are using the artificial manures, that is creating environmental issues. Yield we have to increase. There is no compromise. Water is reducing. Per capita water is reducing. If I talk about the water budget of this world, globe, 99% of the water is in sea or the glacier caps. Only 1% of the water which we use is available for the human consumption, and that too for the agriculture sector. So you can imagine how much pressure is there on the water sector. So, and agriculture sector is the huge consumer of the water. So, and the quality of water for the agriculture is same as the drinking water. So we can imagine how much pressure is there on the agriculture water sector. So solution is only to move for the precision farming system. And I can discuss in hours what is the precision farming system and how it can be implemented in the country. Thank you. Thank you, Dr. Ramkaran. Yeah, you would like to respond? The question has been raised that the agriculture, how it can be sustained. One of the panelists has rightly said that the yield has to increase, the productivity has to be increased with the reducing land and in the water. And for that, we have to opt for the vertical farming also, diversification also, and use of the technologies which I mentioned, the robotics, IoT, AI, and other things, so that we can get the maximum from the minimum input, maximum output. And that should be the main target. And we should go for the use of the technologies and train the farmers. And moreover, we should go for the composite farming, so that we can use the technologies in a better manner and harness the potential of those technologies. Thank you. Thank you. Thank you. I think the percentage of these service sectors, agriculture sector, is not a major concern, because if you see the US contribution from agriculture in total GDP is less than 10%, whereas India is at least 16 to 17%. I think focus should be shifted from the production to productivity with the improved technology, and we can sustain. So these are the something which I would like to add. Any other questions, sir? कृपया माइक दीजिएगा प्रश्नकर्ताओं को. आगे की पंक्ति में एक सज्जन प्रश्न करना चाह रहे हैं. एक बहुत पुरानी कहावत है, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है. और जब हम 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, तो हम उस कैनवास को देखते हैं, अपने सोशो इकोनॉमिक फाइबर को देखते हैं. और जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ से हम अपनी कल्चर और अपनी लेगेसी को कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं. माइग्रेशन इज वन ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम which I want to impress. Development is in cities, economic growth is in the cities,
But when we move from villages to cities, we are losing a lot of other things. Similar the case of Uttarakhand, you see that Uttarakhand hills are right now the blank canvas for us. So why don't we establish a connectivity, because as a researcher, until unless our villages are not connected and the new growth centers of India, say for next 20 years, should be near the villages, so that the migration from villages to city may be stopped. And this I want to know from the experts, that can it be a solution? Thank you, sir. I think, yes, you have, raised the right point. Migration is a real concern. For that, the decentralization and empowering at the district level is very, very important. And most of the state government has initiated the process, like every district should have a hospital, should have an education institution. This is the way that we can stop this migration. Thank you. Any other questions? मेरा दर्शकों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि समय सीमित है और हमें अपने अगले टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है, तो सभी पैनल विशेषज्ञों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। इसके साथ ही जोरदार तालियों से आपका आभार हम व्यक्त करेंगे। थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी सर्वप्रथम मॉडरेटर डॉक्टर राम शर्मा, वाइस चांसलर यूपीईएस यूनिवर्सिटी को कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। आपके साथ ही प्रोफेसर ओंकार सिंह, वाइस चांसलर वीर माधो सिंह भंडारी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी, डीन ऑफ स्पॉन्सर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी, आईआईटी रुड़की। डॉक्टर संजय जसोला, वाइस चांसलर ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून। और डॉक्टर हरिहरन मुथुस्वामी, डीन एनआईटी श्रीनगर। कृपया जोरदार तालियों से हमारे पैनलिस्ट का स्वागत कीजिएगा। Hi, good morning, everyone. And let's quickly jump on to the topic without any formalities. I'd like to keep the format very simple. I'd request each speaker to speak for 2 to 3 minutes on the topic. And then maybe we can have some conversation, and then in between we would take questions for a change from the students. This hall has many students. I could see in the previous panel that a lot of you were raising hands, but you did not get an opportunity. So this panel, you would certainly get a chance to ask questions. This panel is quite interesting in the sense that it has representation from almost all the quarters of Indian higher education system. There is an institution of national importance, IIT, which is represented. Another institution of national importance, NIT, which is also represented. A state public university as well as a state private university. So it's kind of represents the entire canvas of the private higher education, the higher education system in India. The topic is quite interesting: innovation, science and technology, and what kind of role it plays into the idea of Viksit Bharat 2047. So with that, I would request Professor Onkar Singh to share his views on how does he look at innovation, science and technology's role into India at 2047, and also a role of state public university into kind of leading into that developed Bharat. So good morning to all of you, Honorable Governor Sir, Honorable Vice Chancellors of the universities, distinguished faculty members and students. The topic of the day is pertaining to the innovation, science and technology. It does not need much more underlining, but the challenge lies in how are we going to exploit all these things.
We are well aware of the technological advancements which are happening, and we are also aware that as a part of the academic fraternity, we are the creators of the human resource for future. We have that potential. Every teacher is interacting with sizable number of students in the classrooms or laboratories, and they can be a critical instrument in bringing the change. As a part of the state public university, especially dealing with the technical education, this is the onerous responsibility on all technical institutions to understand and underline the science and technology through different programs in the action as well as in preaching. See, the problem is how are we going to create innovators? There has been a lot of stress by the government of India, lot of money is also being spent, lot of innovation centers are being established, but we have only selected number of such centers in the country. And primarily the focus is only on the central funded institutions. We need to spread it out. The public funding on the innovation and the promotion of science and technology needs to be on the agenda number one. Then only we'll be in a position to reach up to the masses. If you look into the total higher education scenario, we have more than 1100 universities as of now, out of which around 450 plus are the private universities, rest are all the government universities. And if you look into the total number of colleges which we have, that is also more than 40,000. So with around 3 crore plus students enrolled in the higher education framework, the institutions, especially the colleges, need to come forward. They are to be made to understand. We have to tell them that you have to do it like this. So the creation of roadmap is much more important. See, that availability of technology is there, but how do we use the technology? That brings the change. See, artificial intelligence, everybody talks of. Digitization, everybody talks of. We have seen that UPI has created wonders with the unified payment interface. It is one of the biggest example of the use of technology, how we have used it, and every street vendor is now having the all financial transactions through UPI. So the technology application, utilization, that needs to be on the foremost agenda. See, the students have to be roped in. The teachers have to lay sufficient stress on the laboratory classes. This could be my personal observation, but the kind of stress which we have on the laboratories, that is somehow diminishing. I am not sure about all the institutions, but the kind of institutional system which I have seen, there is a lot of degradation in the laboratory conduction. The theory classes, which are also being conducted, they need to be connected directly to some kind of productivity. The purpose of a particular class should be clear to the student, then only he will be remaining attached to the class, and the classroom interactions become meaningful. So the success of everything lies behind how effective is the classroom interaction, how effective is the laboratory interaction, and I'm pretty confident if we can engage every student for taking up a problem to be solved by him or her during the course of his or her stay during a program in the institution, we'll be having around 3 crore plus solutions to the problems which the humanity is facing. So the numbers could be very interesting, but the pathway is very arduous, it's very difficult. Every teacher has to brainstorm, the institutional leadership has to come forward, we have to create an enabling system so that every student is empowered and he is competent of taking up a problem and finding out the holistic solution. I am confident that we'll be having the students who are having meaningful education. Great, great, Professor Singh. I'll get back to you on this, but I mean, I really think this involving students into the process of problem solving could really result into a lot of innovative solutions of the problems that we see around. Moving on to Professor Akshat Dwivedi, who is the Dean of Research and Industrial Consultancy at IIT Roorkee. Being a institution of national importance in this region, what do you think could drive innovation, science and technology, not just for the country, but what role IITs can play to have India reach there where we want it to in 2047? धन्यवाद प्रोफेसर राम. माननीय गवर्नर महोदय, सभी कुलपति, कुल शासक, सम्मानीय शिक्षाविद, आप सबके सामने बैठ के मुझे बड़ा तुच्छ सा महसूस हो रहा है, बट यहाँ बैठ के मुझे एक बहुत बड़ा गर्व भी है
और वो गर्व इसलिए है क्योंकि आज के कार्यक्रम की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री, और उसके बाद मोदी जी ने करी, और उन दोनों ने शिक्षा को सबसे ऊपर बताया, और ये सबसे बड़े गर्व की बात है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को 176 वर्ष हो चुके हैं स्थापित हुए। 2047 में हम अपने 200 वर्ष पूरे करेंगे। हमारे संस्थान में लगभग 560 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो विश्व की अनुपम प्रतिभा हैं। सारी दुनिया का ज्ञान उनके पास में है, और ये वो समय है जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा संस्थान इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए क्या कर सकता है। हम लोग बहुत लंबे समय से इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने बहुत अल्प समय में करी है, उसके पीछे का एक छोटा बैकग्राउंड मैं वो लेना चाहूँगा। 2047 विकसित भारत जब बात कहते हैं मोदी जी, तो ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके बीज उन्होंने बहुत पहले बो दिए थे। वो बीज शुरू हुए थे मेक इन इंडिया से, उसके बाद वो आगे चला आत्मनिर्भर भारत, और सबसे बढ़िया बात हुई NEP 2020, जिसको आज 3 साल पूरे हुए हैं। NEP 2020 IIT जैसे इंस्टीट्यूट के लिए लागू करना बहुत आसान नहीं था। हमने बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों से, नेशनल इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलके इस तरह के वर्कशॉप्स किए जहाँ पे हमने एक एकेडमिक रीस्ट्रक्चरिंग किया। जैसा मेरे साथी ओंकार सिंह जी ने अभी कहा कि बालकों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लाना पड़ेगा, तो सर सबसे पहले हमारे पास लगभग 1500 स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं हर साल। हर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करना होता है उनके फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसको हम कहते हैं टिंकरिंग या मेंटरिंग। उसमें वो अपने एक आइडिया जनरेट करते हैं, उन आइडियाज से कुछ प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं। हर तरह का सपोर्ट जो चाहिए वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है। सर लगभग 1500 प्रोजेक्ट्स में से 350 ऐसे प्रोटोटाइप हैं जो वर्किंग मॉडल्स हैं। ये सर पहले साल की जीत है। बाकी सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन शुरू होता है। आप लोग शुरू कर सकते हैं, कुछ आप लोग अच्छा कर रहे हो तो हमें बताइए, हम भी वो करेंगे। इसके बाद सर आगे चीज़ आती है कि अगर छात्र कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो क्या वो इंटरेस्टेड है उसमें पढ़ने के लिए। सर आजकल स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और IITs का तो नाम ही प्लेसमेंट के लिए माना जाता है। कितने करोड़ का पैकेज। AI और ML 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टूडेंट को बिल्कुल हर सांस में लेते समय भी और छोड़ते समय आते हैं। सर हमने जहाँ पे एक पूरा का पूरा स्कूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के लिए बनाया, उसके साथ ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स हर सब्जेक्ट में, इसका मतलब हर स्पेशलाइजेशन में इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें जो मशीन बनाई है उसमें जोड़िए AI। आप कोशिश करिए कि AI जो मैथमेटिक्स से शुरू होती है उसको कैसे आप प्रैक्टिकल तक ला पाएँ, जहाँ पे मशीन अपने आप कुछ निर्णय ले सके। हाँ, वो निर्णय एथिकल हो, उसका भी ध्यान रखा। इसके साथ साथ जब आगे बात करते हैं तो देश को इस समय कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। IITs टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या हम उस कैपेसिटी बिल्डिंग में उस लेवल पे जा सकते हैं जब हम फैक्ट्री को ट्रेंड वर्क पावर दे सकें? सॉरी सर, ये हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हमने उसके लिए एक नया काम किया। हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लेटेस्ट वर्जन में टीचिंग ऑफ ट्रेनर्स के लिए बात करी, इमर्जिंग एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। मोदी जी ने कुछ समय पहले एक छोटा सा सवाल टीवी पे पूछा था कि अगर कोई स्मार्ट लाइट बनी, वो ख़राब होगी तो ठीक कौन करेगा?